Good afternoon. Today we will see about variables, constants which we are using in a Arduino programming. We will see about operator also. We will wait for 1 to 2 minutes for other student, then we will start our class. Until that, we can revise our previous session. We have seen in previous session about microprocessor, microcontroller, Arduino board, Arduino IDE, sketch. So microprocessor, it is a processor, it is a heart of CPU in which, sorry, in which we have to give input output input output peripherals and memories by interfacing. But in microcontroller all these peripherals and memories are inbuilt. मतलब microcontroller में जो है memories input output peripheral serial interface ये जो सब है वो inbuilt है, हमें वो फिर से एक्सटर्नल कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है. बट इन माइक्रो प्रोसेसर वी हैव टू कनेक्ट दिस पेरिफेरल्स एक्सटर्नली एज वेल एज. If you compare microprocessor with microcontroller, the cost of microcontroller is low. Also, it is requiring less space as compared to the microprocessor. Then we have seen about Arduino board. Arduino board is using the Arduino Atmega 328 microcontroller, which is a 28 pins controller. Then if we are supposed to do programming using Arduino IDE, then we are connecting Arduino board by using USB cable with our PC or a डेस्कटॉप. हम क्या कर रहे हैं, उसको पीसी या फिर डेस्कटॉप को जब कनेक्ट कर रहे हैं तो ऑर्डिनो बोर्ड को हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, बाय यूजिंग यूएसबी केबल. ऑल्सो वी हैव टू गिव पावर सप्लाई टू द Arduino board. Then we have seen about the Arduino programming. In Arduino programming, firstly the default window will open. Then we have to select the Arduino board which we are using. मतलब हम Arduino Uno board use कर रहे हैं, Duo board use कर रहे हैं, which board you are supposed to use, we have to select that board. Then we have to select the port for that board. मतलब हम जैसे पोर्ट सिलेक्ट कर देंगे उसके बाद हम उसमें यदि हमें कम्युनिकेशन करना है अदर पेरिफेरल के साथ तो हम कौन सा पोर्ट यूज कर रहे हैं. वी हैव टू सिलेक्ट Arduino Uno board is using the COM one port for the interfacing purpose. Sometimes it will select COM 3 port. Then we have seen about the data types. We have seen integers, character, unsigned, word, then long, float. If data type is containing only integer value and that are having only positive integers, then we are calling this as a integer. And if it is accepting positive and negative integers, integer मतलब क्या है, वो positive और negative पे value लेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं कि integer. Then we have seen unsigned. Unsigned means if it is taking only positive integer value. Then we have seen about word. Word is nothing but it is a 2 byte. It means what? It is storing 16-bit value. Then we have seen about float. Float means what? If there is a decimal point in a number, then we are supposed to use their float. तब हम क्या करेंगे, वहाँ पे float use करेंगे. So today we will see about the variables. Programs are useful when they process a data. It means what? When we process the data, what programs do all the time? Programs will either get some data to process from user or it will get data from sensors. It means what? It will get data from thermistor like to measure the temperature, or it will get some data about the network, means what, like a database. Then this data will require to store in a memory. It means what? From a sensor, from the network,
or other peripherals, if it is getting any data, then regardless of a place of data where program gets this data, program are supposed to store this data in a memory to work with it. मतलब प्रोग्राम को जो डेटा मिल रहा है वो कहीं से भी मिले, या फिर वो थर्मिस्टर से मिल रहा है, या फिर कोई सेंसर से मिल रहा है, या फिर कोई मेमोरी कहीं से मिल रहा है, अदर पेरिफेरल से, या फिर कोई मेमोरी से मिल रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो डेटा है सम टाइम के लिए हमें वो क्या करना पड़ेगा, उसको स्टोर करने पड़ेगा. To store this data, we require variable. It means what? Variable is a programming construct that will related with a memory location with a name. It means variables are used to store the data. Instead of using a address of memory location in our program, we use an easy to remember a name. मतलब हम क्या कर सकते हैं, we can give any name to create a variable and we can give the type. मतलब हमारा जो डेटा है, मतलब उसको इंटीजर वैल्यू है तो हम उसको क्या करेंगे, डेटा टाइप जो है इंटीजर देंगे. वो यदि बाइट है तो हम उसको बाइट देंगे. इफ इट इज अ फ्लोट देन वी कैन गिव द नेम ऑफ दैट float and we can give any name, valid name to the variable. और मैंने क्या बोला है, if you are writing anything in a program, it means what, if you are writing any name, you are supposed to write this name by using lowercase alphabet or you can use underscore. तो मैंने यहाँ पे लिखा है sensor underscore a underscore value. This is the name of that variable and I am giving that value 196. To print this value, we are using here serial page. It means what? It is printing that value on that name. Now, variables are divided into two types. These types are local variable and the global variable. Variables are divided into these two types by using where these variables are defined. It means what? हम वो वेरिएबल कहाँ डिफाइन कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमने क्या किया है, वेरिएबल को दो टाइप में डिवाइड किया है. कौन से? लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल. फर्स्टली वी विल सी अबाउट द लोकल वेरिएबल. सो local variables, the variables that are declared inside a block. These variables are calling as a local variable. मतलब क्या, जब मैं ये variables जो है मैं यदि उसको फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रही हूँ तो मैं वो वेरिएबल को क्या बोलूंगी, लोकल वेरिएबल. These variables can be used only by the statements that are inside the functions और these are inside the block. मतलब ये जो फंक्शन के अंदर, if you guys can see these variables x, y, z, the local variables, I have declared this variable inside the loop function. तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये फंक्शंस जो है, ये जो वेरिएबल्स है, मैं ये लूप फंक्शन में उसको यूज कर सकती हूँ. वी कांट यूज दिस वेरिएबल आउटसाइड ऑफ दिस फंक्शन. इट मीन्स व्हाट, these variables are declared inside a function and these can be used only by the statements that are used inside the function. Local variables are not known to the function outside their own block. मतलब इस ब्लॉक के बाहर वो अननोन है, वो कोई यूज नहीं कर सकता है. These variables are declared only in this ब्लॉक. ये जो वाइड लूप जो फंक्शन है उसके अंदर मैंने उसको डिक्लेयर किया है तो मैं वहीं पे उसको यूज कर सकती हूँ. देन वी विल सी अबाउट द ग्लोबल वेरिएबल्स. एज द नेम डिफाइन, global variables will be declared outside the function. It means what? We can declare global variable outside of all functions. Usually we can define global variable at the top of all instructions. मतलब हम जब प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम उसको टॉप में
ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। मतलब क्या होगा कि वो जो ग्लोबल वेरिएबल है वी कैन यूज दिस वेरिएबल थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ अवर प्रोग्राम। मतलब लोकल वेरिएबल हम क्या कर रहे थे, सिर्फ हम वो फंक्शन के अंदर यूज कर रहे थे। यू गाइस कैन सी द एक्स वाई जेड दीज लोकल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ वाइड लूप फंक्शन। बट ये जो फ्लोट सी, ये इंटीजर टी और एस है, दिस वेरिएबल्स आई हैव डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन। ये मैंने ये फंक्शन के बाहर टॉप के प्रोग्रामिंग में टॉप में मैंने वो क्या डिफाइन किया है, तो वह मैं वो कभी भी यूज कर सकती हूँ। इट मीन्स व्हाट, ग्लोबल वेरिएबल कैन बी असेस्ड बाय एनी फंक्शन and this variable is available for use throughout our entire program. If we are writing any statement by using two slanting line, then we can call this statement as a comment. मतलब ये प्रोग्रामिंग, यदि मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, ये और कोई देख रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे टू स्लैशेस देके, टू स्लैंटिंग लाइन देके मैं उसमें एक स्टेटमेंट लिख सकती हूँ। एंड दिस विल बी नॉट कंपाइल्ड बाय यूजिंग अ कंपाइलर, दिस विल बी ओनली स्टेटमेंट। मतलब वो किसके लिए होती है, ओनली समझने के लिए कि वो मैंने क्या लिखा है। मतलब मैं वहाँ कमेंट कर सकती हूँ। एंड इफ we have to write multiple statement, then we can write multiple statement by using one slanting line and one multiplication sign, जो स्टार का साइन होता है। by using this you can write multiple comments. What we have to do, we have to start with slanting line and multiplication sign, and you have to end with multiplication sign and slanting line. और यदि हम एक कमेंट लिख रहे हैं तो उसमें उसको हम कैसे लिखेंगे, बाय यूजिंग टू स्लैंटिंग लाइन। नाउ वी विल सी अबाउट द कॉन्स्टेंट्स। If there is a value that will not be changing in our sketch, we can call this value as a constant. मतलब जो मैंने यहाँ पे x y z दिए थे, we can take any value, so these are nothing but a variable. But instead of this variable, if I am giving any constant value that will not get change throughout the program, then we can say that value as a constant value. जब वो चेंज नहीं हो रही है प्रोग्राम में, वो यदि कांस्टेंट रह रही है, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, कांस्टेंट। Constants have various benefits regarding memory and processing speed, and it is good habit to use these constants. You can declare constant as a constant integer, constant float, any data type. ये data type जो है, if we are using integer value, then we can use here data type integer. तो constant को हम क्या लिख सकते हैं, you can the shortcut CONST you can write, and we are using here integer, and sensor pin, it is nothing but a name of that pin. So we are giving it is value 1, that's why I am using here sensor pin equal to 1. So this is the name of that variable and it is a sensor pin, and we are defining this pin as a constant, so I am using here constant integer. It means what? If you try to change that value later, you will not compile that program because you will get their compiler error message because you are using here constant. That's why we can't change this value, and if you are changing this value, you will get a compiler error message and your program will not get uploaded to the Arduino board. मतलब यदि ये कांस्टेंट का वैल्यू तुम चेंज करोगे तो वो जो प्रोग्राम है वो तुम्हारे बोर्ड पे क्या होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, अपलोड नहीं होगा। Now we will see about the operators which we are using in a Arduino programming. There are different type of operators we are using in a Arduino programming. We will see one by one. Arithmetic operator. So arithmetic operator मतलब क्या होगा, if we are doing any addition,
subtractions, multiplication, division. Means what? We are doing any arithmetic operation. Then we are supposed to use arithmetic operator. जैसे कि हमने अभी के ये प्रोग्राम में हमने क्या किया है, यहाँ पे कंसिडर किया है ये वेरिएबल्स को और हमने यहाँ पे वैल्यू दिए. बट इफ यू आर गिविंग टू इंटीजर as an input and you are giving one integer as an output and you are doing here addition, then you can use for addition arithmetic operator. If you are comparing two operations, it means what? If you are comparing any two data, then we can compare by using the comparison operator. Means what? If it is a less than or it is equal to or less than equal to greater than equal to, all this comparison we can do by using the comparison operator. Then bitwise operation. In bitwise operations, sorry, firstly we will see about the boolean operator. In boolean operator, if we are supposed to do any logical boolean operation, it means what? If you are doing any logical and, logical not, logical or operation, then we can use boolean operator to do this operation. And in bit operation, if you are doing any binary and operation which occupies a bit to the result, or if you are doing any XOR operation or operation, you can do shifting to right, shifting to left. It means what? जो and और ये जो operations है, we can do these operations by using the bitwise operator. We will see these operations one by one. Firstly, we will see about the arithmetic operator. If we are considering here, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज दिए हैं. If you are considering A and B as a variable and you are considering A equal to 10 and B equal to 10B, then if you are using equal to sign and if you are taking values 10 10 for A and B, then according to equal to sign, what we will give? We will see here A equal to B. It means what? It stores the value to the right of equal sign in the variable to the left of equal sign. मतलब यदि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में A को 10 और B को 20 कंसिडर कर रही हूँ, बट इफ आई एम यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब इक्वल टू, we can say assignment or a equal to operator, then what will happen? It will store the value of right of equal sign in the variable to the left of equal sign. तो वो दोनों जगह क्या कर देगा? जो इक्वल टू के राइट के साइड जो वैल्यू रहेगी, it will automatically assign to the left of equal sign. If you are doing addition, it means what? If you are using addition operator in Arduino programming, then it will add two operands by using this addition. It means what? If you are taking A equal to 10 and B equal to 10, 20, you will get here A plus B, that will be 30. If you are using subtraction operator, it will subtract second operator from a first operator. यदि हमारा फर्स्ट ऑपरेटर 10 है और दूसरा सेकेंड ऑपरेटर 20 है, तो 10 minus 20 हमें मिल जाएगा यहाँ पे -10. If you are doing multiplication A into B and if you are taking 10 into 20, then you will get here 200. If you are doing division, divide numerator by denominator, and if you are doing division as B by A, B is nothing but 20 and A is a 10, then you will get B by A equal to 2. 20 by 10 मतलब हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 2 मिल जाएगा, 2. If you are doing modulo, it means what? You are using modulo operator. Then according to modulo operator, you will get modulo operator and remainder of after integer division. If you will do B modulo A, B is nothing but 20 and modulo by A 10, तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ रहेगा ही नहीं. That's why you can write here, you will get here 0 value. Okay, now we will see about the comparison operator. If you are again assuming A equal to 10 and B equal to 20,
and you are using double equal to, जो equal to का sign है 2 times if you are using, then if you are checking these values, these are equal or not equal. You are taking a equal to 10 or b equal to 20, so these are not equal. That's why you will get here not true. It means what? It will check if the value of two operands are equal or not. If yes, then condition becomes true, and if false, then condition will become false. It will check. Checks not equal to, मतलब एक्सप्लोमेट्री और इक्वल टू साइन यूज कर रही हो तो उसका मीनिंग क्या हो रहा है? नॉट इक्वल टू. इट विल चेक इफ द टू ऑपरेंड्स आर हैविंग सेम वैल्यू और नॉट. इफ वैल्यूज आर नॉट इक्वल, देन कंडीशन इज ट्रू, एंड इफ इक्वल, कंडीशन विल नॉट ट्रू. Less than, it will check if the value of left operand is less than the value of right operand. मतलब वो चेक करेगा जो दो वैल्यूज है, लेफ्ट साइड की वैल्यू यदि राइट साइड की वैल्यू से कम रहेगा तो अवर कंडीशन विल बी ट्रू. और इफ it will check for greater than, if the left side value will be greater than the right side, then our condition will become true. यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारी कंडीशन जो है ट्रू बन जाएगी. एंड इफ इट इज लेस, देन our condition will become false. Now we will see about the Boolean operator. In Boolean operator, what we will do? We will do here logical and operator. If both operands are non-zero, then condition becomes true. जैसे हम addition में, if you are doing and means nothing but it is used for the addition purpose. In a Boolean expression, it means what? 0 और 1 का addition. तो and is used for the Boolean multiplication, sorry not for addition. और addition के लिए यूज होता है, and जो होता है multiplication के लिए. For Boolean मतलब 0 और 1 के लिए. तो 0 और 1 का मल्टीप्लीकेशन तो बुलियन में देखोगे. इफ यू आर डूइंग multiplication of 0 and 1, 0 into 1 or 1 into 0, you will get 0. And if you are doing multiplication of 2 zeros, then also you will get 0. But if you are doing multiplication of 2 1, then you will get value 1. It means what? Your condition is becoming true. That's why this logical and operator, if both operands are non-zero. Non-zero मतलब क्या? उनका value 1 है. Then your condition will become true. And if your value is not non-zero, it means what? If it is 0, then your condition will become false. Now we will see about the or Boolean operator. तो हम Boolean expression में Boolean addition के लिए or use करते हैं. तो उसमें क्या होता है? You are supposed to do addition of 0 and 1, or you are supposed to do addition of 0 and 0 or 1 and 1. तुम 0 और 0 का एडिशन करोगे तो तुमको 0 मिलेगा, या फिर तुम 0 और 1, या फिर 1 और 0, या फिर 1 1 का करोगे तो तुमको 1 मिलेगा. इट मीन्स व्हाट? अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल और ऑपरेशन, इफ एनी ऑफ टू ऑपरेंड इज अ नॉन जीरो, मतलब दोनों में से एक का वैल्यू नॉन जीरो मतलब 1 है, देन योर कंडीशन विल बिकम ट्रू. और इफ any of two operands are not non-zero, then your condition will be false. Now we will see about not operator. As not operator, not means what? It will opposes. It means if there is 0, your answer will be false. और यहाँ पे 1 है तो 1 का क्या होगा? 0 हो जाएगा. It means what? Logical not operator used to reverse the logical state of its operand. If it means what? If our condition is true, then logical operate will make it false. मतलब हम यदि वहां पे 0 करेंगे, मतलब हम कंडीशन 0 देंगे तो उसके ऑपोजिट रिवर्स होगा. तो हमारा कंडीशन 0 है मतलब क्या? फॉल्स है, तो वो ट्रू हो जाएगा. और इफ यू आर गिविंग हियर ट्रू, it means what? You are giving here one value, then your logical not operator will make it false, मतलब उसको 0 कर देगा. These are the Boolean operators we are using in a Arduino programming. Now we will see about the bitwise operation.
These operations also using for the Boolean addition, Boolean multiplication, and these are used for the XOR operation also. But these are using for the bitwise, bitwise मतलब यदि वहां से 4 बिट से भी ज्यादा है तो भी हम उसको यूज कर सकते हैं. हाउ वी आर यूजिंग, कंसिडर वी आर टेकिंग हियर वैल्यूज a इक्वल टू 60 एंड b इक्वल टू 30. हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, a इक्वल टू 60 कंसीडर कर रहे हैं और b इक्वल टू 13. Then according to the binary and operation it will copies a bit to the result if it exists in a both operand. मतलब दोनों ऑपरेंड के अंदर अकॉर्डिंग टू एंड क्या होता है, वी आर यूजिंग एंड ऑपरेशन फॉर द मल्टीप्लीकेशन. और मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, 1 इंटू 1 को ही 1 आता है. तो हम क्या करेंगे, पहले 60 और 12 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. एंड वेयर 1 आ रहा है, दोनों में भी जहां पे 1 आ रहा है विल टेक हियर 1. देन वी विल गेट रिजल्ट 12. दैट विल बी 4 zeros 1 1 0 0. ये मैंने बाइनरी में लिखा है. 12 को बाइनरी में तुम लिख सकते हो 11. Now we will see about the OR operation. We can denote OR operation by one standing line. Binary OR operator copies a bit if it exists in either operand. मतलब if we are taking a equal to 60 and b equal to 13, तो दोनों में भी जहां पे भी 1 रहेगा वहां पे मैं यहाँ पे 1 लूंगी रिजल्ट में. We are using 60 and 13. That's why I am taking 8 bit value. 60 को क्या है 8 बिट लगता है. That's why we are taking here 8 bit value. तो जहां जहां पे दोनों में 1 है वहां पे यदि तुम कैलकुलेट करोगे तो you will get here 61. That's why A or B will give the 61 and its binary I have given here 0011 1101. If you are doing XOR operation, XOR में क्या होता है, binary XOR operation copies the bit if it is set in one operand but not both. मतलब क्या, जो हम 60 और 13 लिख रहे हैं दोनों में से एक ही जगह पे है, दूसरी जगह पे नहीं है. मतलब एक में 0 है तो दूसरी जगह 1 है और एक में 1 है तो दूसरी जगह 0 है. देन वी कैन यूज XOR ऑपरेटर and it will take A XOR B and you will get here 49. मतलब 60 और 13 को मैं पहले बाइनरी में 8 डिजिट में कन्वर्ट करूंगी और जहां जहां पे 1 है, यदि A में 1 है मतलब 60 में 1 है और B में नहीं है तो मैं यहाँ पे 1 लूंगी. और यदि A में 1 नहीं है और B में है तो मैं वहां पे 1 लूंगी. बट दोनों में 1 है या फिर दोनों में 0 है तो वी विल टेक हियर 0. वी कांट टेक हियर 1 according to the XOR operation. Now we will see about the conditional statement which we are using in a Arduino programming. We have seen conditional statement. There are 3 types. First will be if, second will be if else, and third will be if else if. It means if there are 2 conditions. In conditional statement, if we are giving any condition here, it means what, if you are using 2 integer like integer a and b and you are giving any condition, if a is greater than b, then what will happen, और a की वैल्यू b से ज्यादा नहीं है, then what will happen, it means what, if condition is false, then ये कोड जो यहाँ पे लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे जो कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा. It means what, if you are giving any condition, it means what, if you are here doing decision making structure, then we can use conditional statement to do programming. It means what, decision making structure requires that programmer specify one or more conditions to be evaluated by program. मतलब जब हम एक या एक से ज्यादा कंडीशन देते हैं तो क्या होता है, decision will be depend on that condition. So we can call this structure as a decision making structure, and it should be along with a statement or statements to be executed if condition is determined be true or optionally if condition is determined be false.
हम क्या करते हैं, इस कंडीशन के साथ हम क्या करते हैं, एक तो एक आधा स्टेटमेंट मतलब एक आधा इंस्ट्रक्शन, और वी कैन गिव मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल स्टेटमेंट, मतलब हमें एडिशन करना है, हमें उसका डिवाइडेशन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी। यदि उनका ए इक्वल ए इज ग्रेटर देन बी और हमारा कंडीशन फॉल्स है और हमें सिर्फ सब्सट्रैक्शन करना है, तो वी विल राइट दैट स्टेटमेंट हियर। मतलब ये इफ का जो ब्लॉक है वो खत्म हो जाएगा, उसका लूप ब्लॉक, देन वी विल राइट फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब फॉल्स कंडीशन में जो हमें एग्जीक्यूशन करना है वो हम क्या करेंगे, ये लूप के बाहर लिखेंगे। एंड आफ्टर दैट कंडीशन, इफ दैट कंडीशन विल बी फॉल्स, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे एंड देन इट विल गो टू द रिटर्न। It means what? We can call this structure as a decision making. If we are using if statement, then it takes an expression in parenthesis and a statement or a block of statement. मतलब जो भी हमें कंडीशन देना है हम क्या करेंगे, उसको parenthesis में देंगे. So parenthesis, already I have explained about the parenthesis in a last session. If you are defining function in Arduino IDE, you are defining two functions. Which functions? Void setup and void loop. Loop और setup ये दो function use कर रहे हैं, and we are using these functions by using open and close parenthesis. As well as if you are supposed to define any condition, then you are supposed to express that condition in a parenthesis. It means what? Open or close bracket में तुमको वो condition लिखना है. And if the expression is true, then the condition or a block of statement gets executed. Otherwise, this स्टेटमेंट विल बी स्किप्ड, मतलब हमारी कंडीशन फॉल्स रहेगी और यहाँ पे हमने कोई स्टेटमेंट लिखा है, कोई लिखा है कुछ इंस्ट्रक्शन, तो दैट विल बी नॉट एग्जीक्यूटेड, दिस इंस्ट्रक्शंस विल बी स्किप्ड. नाउ वी विल सी अबाउट द इफ एल्स. इफ एल्स में क्या होगा, इफ we are writing any statement in a if statement, then if statement can be followed optional else statement. मतलब if you are giving any statement in a if statement as well as in a else statement, if your condition which it is writing in a if statement is false, then it will goes to the else statement. मतलब हमने जो दूसरी कंडीशन दी है, इफ में यदि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उसमें जो भी तुमने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वो स्किप हो जाएगा एंड इट विल गो टू द else statement. Then what will happen, else में हम जो भी स्टेटमेंट देंगे that will executed only which will written in a else statement. It means what? If statement can be followed by optional else statement. मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, if के साथ फिर से else statement को भी follow कर रहे हैं, which executes when expression is false. मतलब if statement में यदि लिखा हुआ false रहेगा, then it will goes to the else. मतलब यहाँ पे और एक ब्लॉक आ जाएगा, ये कंडीशन के बाद और एक else का ब्लॉक आ जाएगा. ये false है तो it will goes to the else. else में जो भी स्टेटमेंट लिखेगा वो एग्जीक्यूट करेंगे. Then if else if statement, here we are supposed to give two statement. If statement can be followed by optional else if else statement. It means what? Which is very useful to test various conditions, which is using else if statement. मतलब मैं if में लिख रही हूँ, if that condition is not satisfied means that condition is false, then it will go to the else if. Then it will again see if condition which is written in else if is true or false, and according to that condition that will decide the statements written in that will be executed or not. मतलब कंडीशन ट्रू रहेगा तो एग्जीक्यूट करेगा और कंडीशन फॉल्स रहेगा तो इट विल नॉट एग्जीक्यूट. देन if you are supposed to write any statement, it means what? Command. Then you can write the command by using two
slanting line, two slash, and you are supposed to write multiple commands, then you can write these comments by using one slash with respect to one multiplication sign, and you are supposed to end that command by using one multiplication sign and one स्लैश मतलब वन स्लैंटिंग लाइन। और जो मल्टीप्लिकेशन है वो जो हमारा टू क्रॉस लाइन रहता है वो नहीं, हमें कौन सा यूज करना है, स्टार वाला मल्टीप्लिकेशन यू आर सपोज टू राइट। एंड अवर प्रोग्रामिंग विल बी सिमिलर विथ अ सी लैंग्वेज। जैसे हम सी लैंग्वेज में पहले क्या करते हैं, हिडर फाइल देन वॉइड मेन लिख के हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हियर वी आर सपोज टू राइट टू फंक्शंस, void setup and void loop function. If anyone is facing any issue, then you can ask. Otherwise, we will revise what we have studied today. There are two types of variable, local and global variable. If you are supposed to define local variable, then these variables are defined in a function. It means what? These variables are used only in a that given function. You cannot use these variables outside of the function. And if the variables are global, then you can use these variables out of the function. It means what? You can use this variable in lifetime of a program. It means these variables can be used inside as well as outside the functions. Then we can write the program by using name and by using variable here. Byte is nothing but it is a data type. I have given here name, sensor, a type, and we have to return, मतलब हमें वो फिर से जो हम इनपुट दे रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट को हमको दिखाना है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिटर्न आल्सो। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर रिटर्न स्टेटमेंट। So we are using here three functions: return type, name, and list of parameter. So here this byte is a data type, sensor a value is a name, and we are giving here value, and we are printing this value by using serial print instruction. If we are defining this variable inside the function, I have given this variable inside the loop function. That's why we can call these variables as a local variable. If you are declaring variables outside of function, ये जो function है while loop और while setup, उसके बाहर, मतलब मैंने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया है लिखना, at the top I have declared variable. That's why we can call these variables as a global variables, and global variables will be useful throughout the lifetime of program. We can use this global variable inside the function and outside the function also. मतलब तुम ये variable function के अंदर और function के बाहर भी use कर सकते हो. Now we will see about the constant. If there is a value that will not be changing in a time, then we can call this value as a constant. Constants have many benefits regarding memory and processing the speed. You can declare constant by using constant integer. If you are declaring any float, then you can declare this by using constant float. If you are declaring any word, you can declare constant word. It means what? If that value is not changing in a program, then we can declare that value by using a constant. Here you can define a name of that variable. I have used here underscore as well as lower case अल्फाबेट। मतलब यदि मुझे ना कोई भी नेम डिफाइन करना है तो मैं लोअर केस के अल्फाबेट एज वेल एज मैं अंडरस्कोर यूज कर सकती हूँ। सो आई हैव गिवन हियर नेम और मैंने वो कांस्टेंट वैल्यू 1 दिया है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर कांस्टेंट इंटीजर सेंसर अंडरस्कोर पिन इक्वल टू 1. Now we will see about the operator. We are
supposed to use these operators in a Arduino IDE program. It means what? हम ये operators कंपैरिजन पर्पस के लिए, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए, अरिथमेटिक के लिए, या फिर हम उसको बुलियन ऑपरेशंस के लिए, बिटवाइज ऑपरेशंस के लिए ये यूज कर सकते हैं. वी विल सी वन बाय वन. इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस you can use assignment operator, addition, subtraction, division, multiplication, modulo operators. These operators are used for adding two operators or dividing numerator by denominator, or you can do modulations, you can do addition of two operands, or you can subtract second operand from a first operand. In comparison operator, you can compare two values. It means what? You can compare two values. I am comparing here values of A and B. If these values are having same value, then you can say these values are equal. If these are not equal, you can use exclamatory with equal to sign. This is nothing but a not equal to comparison operator. And if it is value is less than, मतलब जो ऑपरेंड का लेफ्ट वैल्यू है वो यदि छोटा है राइट ऑपरेंड से, तो यू कैन से यूर कंडीशन इज ट्रू बाय यूजिंग लेस ऑपरेटर. Exactly vice versa for the greater than. In Boolean operator, you can do logical AND operations here, and if you are using these AND operations for the multiplications, if both operands are having non-zero value, then your condition will be true, and if any of two operands is having non-zero value, then in addition, it means what? Or operations, your condition will become true, and you can say A or B is having true value. In not operation, it is calling जो exclamatory symbol होता है, we can say this as a not operand, and logical not operand will use to reverse the logical state of its operand. It means what? If condition is true, then logical not operand will make it false. मतलब हम यदि कंडीशन फॉल्स दे रहे हैं तो इट विल मेक इट ट्रू, मीन्स इट विल डू रिवर्स of the logical state of its operand. Then conditional statement. We are using conditional statement in Arduino programming. We are using if statement, if else statement, if statement. मतलब if we are using if statement and our statement is not true, it means what? It is false. Then it will directly go to the out of that statement, it will skip that statement, and if condition is true, then it will execute the statement written after the if function. It means what? यदि तुम्हारा कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट रहेंगे वो स्किप कर देगा, और हमारा कंडीशन ट्रू है तो यहाँ का जो स्टेटमेंट है इट विल एग्जीक्यूट, एंड you are supposed to write this condition by using the parenthesis, open parenthesis and a close parenthesis. मतलब तुमको इसको ब्रैकेट में लिखना है. If you are using if else statement, then if statement will be followed by optional else statement which executes when expression is false. मतलब if का statement false है तो it will execute only else के बाद में जो statement लिखा है. If else statement, it means what? Now we will see about else if else statement. उसमें क्या होता है? Firstly, it will see if statement. The if statement can be followed by optional else if else statement, which is very useful to check various conditions using single if else if statement. Then switch case statement, similar to the if statement, switch case control the flow of program by allowing programmer to specify different code that should be executed in a various conditions. Thank you. If anyone is facing any issue, you can ask.
Otherwise, you guys can leave now. Thank you.